Hello everyone, very good morning all पिला and welcome all to Ada 24/7 Odia YouTube channel. समस्त को Ada Odia को welcome. This is Satya Sir Pedagogy. समस्त को welcome करछि Ada Odia को. Good morning everyone. प्रणाम. समस्त पिला रेनी मॉर्निंग सब आई थिंक सब बड़ा वर्षा होछि. रेनी मॉर्निंग रे very good morning. हम माने पिला माने well already discussed SSB TGT रो pedagogy रो mock test discussion करछे around 19 mock test discussion करछे 20 mock test means around 400 questions 400 क्वेश्चन हम डिस्कशन करछे 400 क्वेश्चन हम डिस्कशन करछे 400 हम ऑलरेडी आपनकर एसएसबी टीजीटी पई pedagogy डिस्कशन करछे याडे जदि आपन फ्यूचर रे आगो को रिटायर की आरएसटी होची इथर मध्ये एगुडा को मध्ये आपन को हेल्प नियत भाबरे करिवो ठीक अछि ओके समुद्री के सेशन को लाइक एंड शेयर कर दियंतु देन वी स्टार्ट आवर सेशन सेशन को समस्त गोटे लाइक एंड शेयर कर दिन पिला माने तापर हम सेशन स्टार्ट करबा वेरी गुड मॉर्निंग अगेन समस्त को वेरी गुड मॉर्निंग पिला माने भलो अच्छा ठीक ठाक अच्छा रेडी चलो तो हमें आज मॉक टेस्ट नंबर 20 डिस्कशन करबा नोटिफिकेशन आसुनी मु आडा टेलीग्राम रे भी दो दिछु आडा टेलीग्राम में जॉइन कर जिवो तबरु छोटिया थडदटी आपन मन पई पिला माने setting goals is the first step in turning the invisible into visible जो जिनस हमें पाइने जो जिनस हमें जानिने ठीक अछि तो से जिनस को पाइबा पई प्रथम स्टेप होची फर्स्ट स्टेप होची यू हैव टू सेट अ गोल इफ योर गोल इज नॉट प्रॉपर देन आगु बढ़िबाटा भारी कष्ट you have to set the proper goal for it okay yes समस्त पिला माने प्रणाम नमस्कार और गुड मॉर्निंग चलो तो आम लास्ट होमवर्क आंसर डिस्कशन करवा ता सहित मॉक टेस्ट नंबर 20 डिस्कशन करवा होमवर्क लास्ट मध्ये आपण मन पे होमवर्क अछि विल डिस्कस दिला लास्ट होमवर्क आपण मन पे जे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन टीचिंग रे पिलार प्रीवियस नॉलेज प्रायर एक्सपीरियंस जानिबा भारी कष्ट जो भारी कष्ट न सो टीचिंग रे पिलार प्रायर नॉलेज बा प्रीवियस नॉलेज बा प्रीवियस एक्सपीरियंस जानिबा निहाती जरूरी जानले कोन हो यदि हम जानू छै इट अलाउज द टीचर्स टू इग्नोर द स्टूडेंट्स इग्नोर तो कथा बिन है इट इन्फॉर्म्स इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड हेल्प्स टू बिल्ड अप स्टूडेंट्स एक्जिस्टिंग नॉलेज तो प्लानिंग रे आपन सहायता करिवो प्रीवियस नॉलेज अनुसार प्रीवियस नॉलेज अनुसार हम आगु बढ़िबा ओके इट विल हेल्प द टीचर टू प्लान द क्लास प्रॉपर्ली सिंपल कथा सिंपल क्वेश्चन तो आंसर टू भी बहुत सारा पिला आंसर देइछन पिला मन को नाम मेंशन करिया दरकार निहाती भाबरे आरती राजेश राजेंद्र को जे पीजीटी हिस्ट्री पई आडा 2% किछि क्लास अरेंज करि होबा पई एडमिनिस्ट्रेशन को डेफिनेटली आई विल टेल दीपक निगमा सुश्री संगीता अनिल कुमार लेट्स डू इट महेंद्र दास चंद्रमणि इत्ती नायक सुप्रिया विश्व रंजन अभी असन प्लान बहुत सारा प्लान आंसर देसन पूजा मिताली उषा मधु दिव्य जयंती सुलोचना गीतांजलि मधुस्मिता लिपिका प्रशांत जेडीआर 27 प्रज्ञाश्री प्रियंका साहू बहुत बहुत धन्यवाद पिला माने ओके यस थैंक यू सो मच हम स्टार्ट करिया पिला माने मॉक टेस्ट नंबर 20 रो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू जे आसोसन देछि रीजन देछि आसोसन पढिबा रीजन पढिबा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स for sharing their misconception and alternative conceptions
reason देछि misconception or alternative conceptions are always baseless and are insignificant in process of learning. इठी reason हमको हटेबार अछि सेठी because लगेबार अछि reason हटेबो because लगेबो फर्स्ट सेंटेंस पढिबो सेकंड सेंटेंस पढिबो जे तुम लागु जे एटा तार पे ठीक हेतिबो तने ठीक लागियो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेले टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटी टीचर पिला को सुजोग दवा दरकार फॉर शेयरिंग देयर मिसकनसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन मिसकनसेप्शन अल्टरनेटिव कंसेप्शन पिला माने निजे शेयर करन भलो कथा खराब कथा नै स्टूडेंट शुड शेयर देयर ओन डाउट ठीक अछि भलो भलो ऑप्शन खराब ऑप्शन नुहे assertion is correct because misconception and alternative conceptions are always baseless misconception or alternative conception सब baseless no it's not baseless इटा पिलार नै conception नुवा conception पिला नुवा आइडिया किंतु पिला माने उधर इंडिविजुअल डिफरेंस अछि पिला माने कोनोसी क्वेश्चन आंसर मल्टीपल वे रे देई पारंती बुझि बेलो तो this is reason is not correct assertion is correct but reason is false so A is true R is false answer is C is the correct answer okay coming to the question number 2 for you question number 2 assertion deji reason deji assertion is there it is the responsibility of teacher to make students active listeners with the help of different interactive techniques reason deji in teacher centric communication students tend to become passive listeners वो कौन है आंसर it is the responsibility of the teacher to make students active listener teacher responsibility पिला मानको active listener बनाया कथा with the help of different interactive technique माने ऑडियो विजुअल मेड हो डिस्कशन हो विभिन्न प्रकार टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करी पिला मानको एक्टिव करिया कथा बुझला reason because in teacher centric communication student tend to become passive listener teacher centric communication रे पिला माने passive listener होंती टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन रे पिला माने पैसिव लिसनर होंती सेति पई टीचर पिला मानन को इंटरैक्टिव करिया कथा सेति पई टीचर पिला मानन को एक्टिव करिया कथा टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन पिला माने पैसिव हो जाउसंती दैट्स व्हाई टीचर शुड अप्लाई वेरियस मेथड्स ऑफ फॉर इंटरैक्टिव लेसन्स टू मेक देम एक्टिव लिसनर यस हां रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी इन ए आंसर Question number 3 for you assertion deji reason deji assertion deji inclusion means students experiencing difficulties learn in isolated sections in a regular schools reason deji because such a practice prepares students experience learning difficulties for participation in society both are correct what of answer what will be the right answer inclusion means students experiencing difficulties learn in isolated sections in regular schools because such a practice prepares students experiencing learning difficulties for participation in society both are false inclusion means students experiencing difficulties learn in isolated sections regular school ले पिला मानको जो अलगा अलगा करी बसा हो सेटा हो inclusion रेगुलर स्कूल ले पिला मानको नॉर्मल पिलांक सहित डिजेबल पिला मानको मिसे की बसेबाटा हो inclusion अलगा अलगा बसेबाटा inclusion नुहे तो एटा false ए ऑप्शन मानकर रीजन गोटे जगह false अछि तो assertion गोटे जगह false अछि एठी केवल डी रे आउ कोडी assertion false नाही आउ कोडी assertion false नाही ऑप्शन डी रे false तेणु डी इज द राइट आंसर
Question number 4. A child's development progress can be accurately measured by comparing her rate of development with other children of the same age. Pattern and the rate of development in children is uniform and remains the same for all children across all cultures. What is answer? A child's developmental progress can be accurately measured by comparing the rate of development with you cannot accurately measure the rate of development of a child. तापर आउट कथा कंपैरिजन तुम जदि कंपेयर करछ नेगेटिव वर्ड इनपुट आउछ पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन दुनिया रे समस्त रेट ऑफ डेवलपमेंट कोन यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन समस्त रेट ऑफ डेवलपमेंट वैरी करे रीजन इज assertion is false, reason is false. Answer is D. D is the correct answer. Okay. Coming to the next question. Question number 5. Assertion deji. Mohan believes that learning with the help of someone is much more effective, so he helps their students in their learning by using various methods. Reason deji. Scaffolding is the term with defined the difference between learning by self and with the help of others. Mohan believes that learning with the help of someone is much more effective, so he helps their students in their learning by using various methods. मोहन जने टीचर जे बिलीव करसन जे मोहन जने टीचर जे बिलीव करसन जे मोहन जने टीचर जे बिलीव करसन जे जदी मु लर्निंग ता बेसी इफेक्टिव हुए जेतले मु पिला मानको हेल्प करिवि जेतले मु पिला मानको हेल्प करिवि हेल्प करिवा द्वारा लर्निंग बहुत इफेक्टिव हुए विभिन्न प्रकार मेथड रे रीजन देछि scaffolding is the term define the difference between learning by self and learning with help of others. निजे करिबा और सहाय्य करिबा निजे एका करिबा अन्य मानक सहाय्य पाई करिबा ता भीतर जो डिफरेंस थाए जो गैप थाए ताको हमें कहू पिले माने जेडपीडी दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट माने द गैप बिटवीन व्हिच ए चाइल्ड कैन डू ए टास्क इंडिपेंडेंटली एंड विथ द हेल्प ऑफ अदर्स दैट इज नॉट स्कैफोल्डिंग. ताको जेडपीडी पे लिखा जाए लिखा है जेडी स्कैफोल्डिंग इज द टर्म which define the difference between learning by self and with learning with the help of others. That difference is called as ZPD. Scaffolding means that temporary help. That difference is called as ZPD. से difference टाको हमें ZPD बेली कहू. The difference टाको ZPD बेली कहू. Reason is false. Only assertion is true. The answer is C. Okay. More than 92 learners are there. जे जणा अच्छा पिला माने समस्ते टिके सेशन को शेयर लाइक कर दे पिला बरे वर्षा पाग अछि लाइक फेक करी बस जजन अच्छा मोर देन 95 लाइफ लर्नर्स आर देयर सेशन को लाइक कर दे पिला बने एवरीबॉडी. ओके डन. चल क्वेश्चन नंबर 6 assertion देजी according to Piaget a child of 4 years learns the primary language बेटा केमती ठीक अच्छे the gap or range or difference is called as ZPD test, not scaffolding na. According to Piaget child of 4 years learns the primary language by their cognitive approach because language can be learned without an environment only through cognition. Only through cognition. Could have answer. What will the right answer? It have it. See your answer. According to Piaget, 4 वर्ष पिलाटा लैंग्वेज सीखे बाय अप्लाइंग देयर कॉग्निटिव अप्रोच. ठीक अछि पिला निजर थॉट अप्लाई करी लैंग्वेज अप्लाई पिला निजर थॉट अप्लाई करी लैंग्वेज सीखे बोले एटा पियाजेट कहिसंती early childhood period कहिसंती एटा ठीक अछि. Assertion is true. Language because language can be learned without an environment. बिना परिवेश जने भाषा सीखि परिबो कि बिना परिवेश जने भाषा सीखि परिबो कि नाही. Reason is false.
So answer A is true, R is false. Language सीखिया पे तो परिवेश तो करना. Without environment you cannot learn language. Question number 7. Assumption देजी, reason देजी. A mentally retarded child feels difficulties in learning basic academic skills because a mentally retarded child has difficulty in focusing attention. mentally retarded पिला difficulty फेस करे बेसिक एकेडमिक स्किल शिखिबारे कारण गोटे मेंटली रिटार्डेड पिला अटेंशन दे पारे नाही. ठीक अछि, इज करेक्ट. एडी मेंटल एमआर छुआ फेल्स डिफिकल्टी इन लर्निंग बेसिक एकेडमिक स्किल्स भी शिखिबारे भारी प्रॉब्लम्स हुए तार कारण से अटेंशन दे पारे नाही. Assumption is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of the assumption. Both are correct. Question number 8. Before starting teaching of a new concept, a teacher should review prerequisite knowledge. This will help students bring to mind the information they will need to understand new concept. नहीं थिले मैं कहबी. Reason देजी corporal punishment should not be practiced as a strategy to rectify the undesirable behavior of learners. What is answer? देखो कही बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ ए न्यू कॉन्सेप्ट नुआ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करिया पूर्व ए टीचर शुड रिव्यू पिलार प्रीवियस नॉलेज को रिव्यू करिया दरकार. दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग टू द माइंड इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट. ऑब्वियसली नुआ चैप्टर स्टार्ट करिया पूर्व प्रीवियस चैप्टर स्टार्ट करिया दरकार. नुआ चैप्टर स्टार्ट करिया पूर्व प्रीवियस नॉलेज पिलार टेस्ट करिया दरकार. कारण corporal punishment सहित previous knowledge की संपर्क अछि कि ए region has any relation with the previous knowledge. ए region ता ठीक अछि. corporal punishment should not be practiced. corporal punishment ता हमें दबा उचित नहीं. has this region has any connection with the region of assertion. एटा जदी हटे कि बिकॉज लिखबी पिलार previous knowledge हम टेस्ट करा दरकार कारण corporal punishment दबा उचित नहीं. B is correct, but B has no relation with A. So both A and R is correct, but R is not the correct explanation of A. So answer is B. B is the correct answer. Question number 9. Assumption देजी, reason देजी. A teacher should encourage her students to make intuitive guess about answer to a questions. Because students should be instructed to answer only when they are absolutely sure of the correct answer. कौन आंसर? नॉन नंबर बोथ फॉल्स. बोथ फॉल्स केमती करे? दीटा का फॉल्स. A teacher should encourage her students to make intuitive guess about a question or answer. What is the right answer? A is true, R is false. A teacher should encourage her students. Teacher पिला को encourage करिया दरकार. से माने intuitive guess करंतु about the answer to a question. मोर क्वेश्चन पचारली आर पॉसिबल आंसर कौन हे पारे. They should guess the answer. Trial and error apply करिया कथा. They should guess the answer. ठीक हो भूल हो let the student to try the answer. ठीक हो भूल हो let the students to try the answer. भलो कथा. But लिखा है students should be instructed to answer only when they are absolutely of the correct answer. जे पर्यंत सी श्योर नहांती करेक्ट आंसर पाई जेतेबेले से पर्यंत हंड्रेड्स गेस करबा तो नेगेटिव कह जाए. ना गेसटा नेगेटिव केमती हो.
ट्रायल एंड एरर रे पिला को ट्राई करिया पे दबा दरकार ना नहीं हाउ गेस इज नेगेटिव हाउ गेस इज एठी कोन लिखा है आमे पिलार इंट्यूटिव गेस पिला जहाँ जानी इंटरनाली जानी ट्राए करने सुजोग दि जाऊ दबा कथा इट लिखा है जेपर्यंत केवल करेक्ट आंसर सियोर नुहे से पर्यंत ट्राए कर ना पिला निजर मत व्यक्त बा निजर ओपिनियन दवा दरकार भूल हो ठीक हो लेट देम टू ट्राए द आंसर हवा दरकार यस गेस्ट स्कैफोल्डिंग वेरी गुड इंट्यूटिव गेस माने इंटरनल गेस आई एम ट्राइंग माय ओन एबिलिटी टू नो तो करेक्ट आंसर मु निजर एबिलिटी अप्लाई कर करेक्ट आंसर जाना पिला ट्राए करा दरकार आम तो आम जो ट्राए कर पिला आम जमी कहे रिसर्च मेथड रे पिला ट्राए करती जमी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे पिला ट्राए करती ह्यूरिस्टिक मेथड रे पिला क्वेश्चन दे दीजिए आंसर देनु दे आर जस्ट ट्राइंग द आंसर हुए देन एसोसिएशन रीजन the new learning should be based upon the preceding facts and information related to what children already know पिला आगु जहाँ जानी सहित नुआ नॉलेज रिलेटेड हवा दरकार प्रीवियस नॉलेज शुड बी कनेक्टेड टू द प्रायर नॉलेज जरूरी प्रेजेंट नॉलेज प्रीवियस नॉलेज शुड बी कनेक्टेड टू द प्रेजेंट नॉलेज भल कथा खराब ऑप्शन नुहे बिकॉज चिल्ड्रेन लर्न इन ए स्पाइरल नॉट लिनियर वे पिला माने सीधा सड़क पढ़ते ना स्पाइरल वे पढ़ती स्पाइरल माने गोटे कनसेप्ट ऊपर आ गोटे कनसेप्ट जोड़ी जोड़ी ही थाए जेमती सर 6th क्लास भी अलजेब्रा अच्छी 7th रे अच्छी 8th रे अच्छी 9th रे अच्छी 10th रे अलजेब्रा अच्छी किंतु 6th रे अलजेब्रा सहित आउ किसी कनसेप्ट ऐड होई 7th रे 7th रो कनसेप्ट सहित आउ किसी कनसेप्ट ऐड होई 8th रे 8th रो कनसेप्ट सहित आउ किसी कनसेप्ट ऐड होई 9th रे 10th रे एंती स्पाइरल है कि धीरे धीरे जाए तो प्रीवियस नॉलेज सहित प्रेजेंट नॉलेज कनेक्टेड प्रीवियस नॉलेज सहित प्रेजेंट नॉलेज कनेक्टेड बोथ ठीक अच्छे पिला माने स्पाइरल वे पढ़ती लिनियर वे नहीं गोटे जिनस गोटे जिनस तो कनेक्टेड बढ़ी 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 चले ना स्पाइरल वे कह जाए स्पाइरल करिकुलम कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय जेरम ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय जेरम ब्रूनर कमेंट तो क्वेश्चन नंबर 11 असोसिएशन देजी रीजन देजी इवैल्यूएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन the intention is to identify the scope and potential for improvement of teaching learning process हाँ जहाँ जानी थो कुछ नुआ आड़ा हो ताको स्पाइरल बिल कह वेरी गुड इवैल्यूएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भल कथा फॉर्मेटिव रे इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे इंप्रूवमेंट हुए ठीक अच्छे बिकॉज the form of such evaluation is informal and has to take place during the instructional process formative during the instructional process during teaching learning process chale ठीक अच्छे both are correct and R is the correct explanation पे question number 12 innovation in evaluation system have to amply safeguard to the reliability and validity issues of tools used इवैल्यूएशन रे नुआ नुआ टेक्निक नुआ नुआ तरीका अप्लाई करा जाउछि नुआ नुआ मेथड नुआ नुआ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन अप्लाई करा होछि जहा फल रे कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी रिगार्डिंग जतिक इश्यू अछि सॉर्ट आउट करा जाय परिबो रिलायबिलिटी वैलिडिटी मेंटेन करा जाय परिबो फॉर्मेटिव कैन बी इनफॉर्मल कैन बी फॉर्मल बोथ हे पारे फॉर्मेटिव मोस्टली इनफॉर्मल हे पारे समेटिव तो बेसी फॉर्मल रीजन देजी the very purpose of evaluation is frustrated if the evaluation tools do not meet the requirement of reliability and validity भल कथा इवैल्यूएशन पर्पस ठीक रही जदि इवैल्यूएशन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी नथियो सेथिबे इनोवेशन टेक्निक आम अप्लाई करछे रिलायबिलिटी वैलिडिटी मेंटेन करिया पे इवैल्यूएशन आम इनोवेटिव टेक्निक नुआ नुआ टेक्निक अप्लाई करछे इवैल्यूएशन रिलायबिलिटी वैलिडिटी मेंटेन करिया पे कारण इवैल्यूएशन फ्रस्ट्रेटिंग हुए जदि रिलायबिलिटी वैलिडिटी मेंटेन न ऑब्वियसली रिलायबिलिटी वैलिडिटी जदि मेंटेन न होनी इवैल्यूएशन इज नॉट ए गुड इवैल्यूएशन सो बोथ आर करेक्ट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर 13 humans are able to learn and remember new things in motor and cognitive domains throughout their lifespan
Outcomes of a severely deprived childhood can be easily changed in later years. कौन अब आंसर है वैसे पढ़ के आंसर दिन humans are able to learn and remember new things in motor and cognitive domains throughout their lifespan. Learning is a lifelong process. मनीष जीवन सारा शिखे ठीक है assertion correct. But outcomes of severely deprived childhood can be easily changed in later years. Childhood रे जे severely deprived पूरा वंचित अच्छी बहुत सारा कथारू सी later year रे पूरा completely change हो जाए पारे पारे भारी कष्ट सिवियरली डिप्राइव चाइल्डहुड जी यार ये इजिली सहज कौन लाटर इयर चेंज हो चेंज हम बट टाइम लगे इट कैन नॉट बी इजिली चेंज्ड इट कैन नॉट बी इजिली चेंज्ड ठीक अच्छे तो रीजन इज फॉल्स रीजन इज फॉल्स बोथ इज करेक्ट चाइल्डहुड रे जे पूरा वंचित हो बहुत सारा कथारू बारंबार डिप्राइव हो तार प्रॉपर एजुकेशन से पाऊनी ताको प्रॉपर केयर लव एंड केयर दिया है नहीं लाटर इयर कौन से जिनसा सहज परिवर्तन हो परिवर्तन हम बट टाइम लगे इट कैन नॉट बी इजिली चेंज से चाइल्डहुड फाउंडेशन स्टेज पिलार मूल दुआ बोली कहुए यस क्वेश्चन नंबर 14 A child's development progress can be accurately measured by comparing the rate of development with other children at the same age. Pattern and the rate of development of children is uniform. এটা ମୁଁ କହିଥିଲି already question repeat ହେଇଯାଇଛି कंपैरिजन करने द्वारा पिलार डेवलपमेंट को आम एक्यूरेटली मेजर कर डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड नियरली बट नॉट एक्यूरेटली हाउ इट्स पॉसिबल इन अर्ली इयर्स बट नॉट इन लेटर इयर्स तो मना कहनी लेटर इयर हम बट टाइम लगे इजिली तो हेनी ना लेटर इयर जदि भल गाइडेंस मिलला केयरिंग पेरेंट्स मिलले आउ तार अपॉर्चुनिटी दिगला जार चाइल्डहुड बर्बाद से कौन आगे जीवन में किसी कर मनोज शर्मा जो IPS 12th फेल से तो IPS टॉपर है ना से तो एग्जांपल गोटे पैटर्न ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट पिलार यूनिफॉर्म नुहे कदापि पैटर्न ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट समस्त अलग अलग मैं कही ऑलरेडी बोथ आर फॉल्स assertion देजी टीचर शुड यूज ए वेराइटी वाइड वे आंसर देख दिल टीचर शुड यूज आंसर देख दिल रे would use a wide variety assessment tools and techniques to assess children पिला को assess करिया पई टीचर भिन्न प्रकार मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करि पारे किछ नहीं मन कथा ए सिंगल असेसमेंट टूल इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड्स प्रोग्रेस गोटे सिंगल असेसमेंट टूल रु पिलार टोटल प्रोग्रेस जानिबा भारी कष्ट ऑब्वियसली सेति पे हमें ऑब्जर्वेशन द्वारा पिलार बिहेवियर जानू इंटरव्यू द्वारा पिलार पर्सनालिटी जानू टेस्ट द्वारा पिलार नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जानू वी आर अप्लाइंग सेवरल टूल्स एंड टेक्निक्स टू नो द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ ए लर्नर हमें ओवरऑल प्रोग्रेस अप्लाई करछु कारण ओवरऑल प्रोग्रेस अप्लाई करछु सेति पई हमें सिंगल असेसमेंट टूल अप्लाई करनु मल्टीपल टाइप रो टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करछु जहाँ द्वारा पिलर ओवरऑल प्रोग्रेस जानी पारे ठीक अच्छे चलो क्वेश्चन नंबर 16 formative assessment is the process linked and directed at raising motivation and engagement level in learning because the purpose of formative assessment is to improve the quality of learning outcomes. Formative assessment is the process linked and directed raising motivation and engagement level of learning.
सर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो अप्लाई करूँ आ द्वारा पिलार मोटिवेशन को आम एंगेज करूँ पिला को लर्निंग रे एंगेज करूँ मोटिवेशन को रेज करूँ बिकज फॉर्मेटिव असेसमेंट पर्पज होची लर्निंग क्वालिटी बढ़ाइबा जदि पिला मोटिवेट होची एंगेजमेंट होची ऑब्वियसली लर्निंग क्वालिटी बढ़िबो रीजन घटेयार अच्छी बिकज लगे पढ़ार अच्छी लगुच ठीक अच्छे बोली ठीक अच्छे आश्वासन देजी रीजन देजी सब जगह आश्वासन रीजन वाला क्वेश्चन हो जाए हौ हवा दरकार In a language classroom, teachers provide audio books along with text materials. Language classroom रे teacher audio book सहित text material पिला मानकु दबा दरकार ठीक अछि दो कोन अछि multiple options of representation cater to the needs of diverse learners such as those with reading related to disorder. आमे multiple option पिला मानकु दबा दरकार जो मानकर reading related disorder अछि से मानकर नीड को जेन satisfy करि हबो करिए ठीक अच्छे बता भल कथा से आम ऑडियो बुक सहित टेस्ट मटेरियल भी दबा दरकार बिकज जो मानक रीडिंग डिजर्डर अच्छी से मल्टीपल टेक्निक अप्लाई हम द्वारा से क्लासरूम रे इक्वल फील करेंगे बोथ आर ट्रू क्वेश्चन नंबर 18 टीचर शुड आस्क क्वेश्चन दैट फैसिलिटेट्स students to establish relationship between that they are expected to learn and what they already know. टीचर क्लासरूम रे क्वेश्चन पचारिबा दरकार कारण पिला कौन पढ़िया पे चाहउछन पिला कौन जानि छथि जानिया पे एटा क्वेश्चन पचारिबा दरकार ठीक अछि क्वेश्चन पचारिबा दरकार क्वेश्चन पचारिबा द्वारा पिला जानिया पे चाहिबो कौन पढ़िया पे से चाहउछि से निजे कौन जानि छि क्वेश्चन पचारले जाना पड़ता प्रीवियस नॉलेज आगु कौन जाना पड़ियो यस prior knowledge does not play any role in learning new concept. Prior knowledge the importance किसी नहीं prior knowledge important role play करना previous knowledge पिलार important role play कर reason is completely false only assertion is true. Question number 19 देजी assertion देजी having a diverse classroom with students from varied socio economical cultural background enriches the learning experience of all students. Reason is only students with visual and hearing impairment and learning disabilities benefits from inclusion. कौन आंसर डाइवर्स क्लासरूम अच्छी जो थे विभिन्न प्रकार सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल बैकग्राउंड पिला माने रहिबा द्वारा लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़े सब पिला मानकर सर एटा को इंक्लूसिव क्लासरूम बेली कुआ जाए assertion is correct only students with visual or hearing impairment and learning disabilities benefit from inclusion माने होची एजुकेशन फॉर ऑल केवल विजुअल हियरिंग और लर्निंग डिसेबिलिटी पिला खाली खाली उपकृत होंदी कहया भूल हो एटा खाली उपकृत होंदी से कहया भूल हो रीजन इज फॉल्स इन inclusion माने होची एजुकेशन फॉर ऑल इट्स नॉट ओनली फॉर द visual hearing impaired and learning disabilities. So reason is assertion is correct, reason is false. Question number 20 continuous comprehensive evaluation gives importance to the continuity of evaluation and the comprehensive assessment of learning outcomes. ठीक है correct continuous and comprehensive evaluation because continuous and comprehensive evaluation covers all aspects of school activities scholastic and scholastic related to child development. ठीक अच्छे assertion is correct reason is correct both are correct both are true so both are true. Next question number 21 diverse needs of assessment and evaluation should be used by the teacher. Diverse mode of teacher classroom रे विभिन्न प्रकार assessment tools and techniques apply करिया कथा ठीक अच्छे करिया दरकार because the purpose of evaluation is to segregate the well performing students from the rest of the class. Sir segregation ना negative word in पड़ा होची evaluation ना purpose होची पिलां को segregate करिवा अलग अलग करिवा separate करिवा ना segregation separation is negative word in पड़ा होची एटा हबनी कथा is to r is false. Question number 22 in the cognitive domain of teaching
learning objective which will be categorized as a higher type of learning outcomes का को हमें higher type of learning outcomes बोली कहबा knowledge and comprehension analysis of conceptual elements application of acquired knowledge and skills synthesis involving the creative organization of ideas evaluation involving the judgment of internal and external assessment external standard 22 सर आमर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अच्छी हायर ऑर्डर आम जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन ये जो एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन ये तीन टाक आम कहे हायर ऑर्डर ये तीन टाक कहे लो ऑर्डर आपको कहे एलओटी आपको कहे एचओटी एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन कोड अच्छे एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन knowledge comprehension application these are lower order thinking skill analysis synthesis evaluation these are higher order thinking skill पहले B D E कोड अच्छे B D कहाँ पर है D so answer is D okay चल question number 23 a teacher uses a question answer session to ensure they do not ensure sorry desired learning outcomes in his classroom. In this process, he offers the following types of comment to a few ones. पिला मानू को कहला, you are right, you are good, बढ़िया करचु, जबरदस्त करचु. ये बड़े जो feedback दोची, you are good, बढ़िया, जबरदस्त, मारी चलो. ये feedback गुड़े कौन कहा जाए? Positive feedback, simple कथा, positive feedback ही कहा जाए. ठीक है? More than 103 learners are there. समझते session गुड़े like कर दो पिला माने. आरे ठीक आरी परे 9:45 बेलू आम गोटे सेसन स्टार्ट करवा जो कोड ऑफ कंडक्ट रे एसएसबी टीजीटी एग्जाम हम कि ना हो ता बाबद सेसन अच्छे जॉइन करें पे चलो क्वेश्चन नंबर 24 आसोसन देजी रीजन देजी इवैल्यूएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ठीक अच्छे ऑलरेडी मुझे कही देती क्वेश्चन रिपीट हो बोथ आर करेक्ट अच्छा टाइम वेस्ट कर क्वेश्चन नंबर 25 सेटा मैं ऑलरेडी कहि देथि देखो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइंड टू असेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिन्स नॉलेज एंड एबिलिटी जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट रे गोटे पिलर अपर एज नुह अपर लिमिट ओवरऑल तार नॉलेज केते एबिलिटी केते जानिबार है सहायता करे कि करे ठीक अछि स्टेटमेंट 2 देछि टिपिकली रेस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइंड टू मेजर the specific behaviors and characteristics of examination. Typical response test करा जाए. Both are correct. The typical response test are designed to measure the specific behavior and characteristics of examine कहले student. Specific response test कहले हमें जेमती कहूचे particularly तारो writing test तार स्पीकिंग टेस्ट पर्टिकुलरली गोटे गोटे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को हम जाना चेष्टा करूँ बोथ आर करेक्ट ठीक अच्छे बोथ स्टेटमेंट करेक्ट स्कोर केते कहबो पिला माने जणाइबो एतला आपण मन पे होमवर्क नहीं जाइथंतु स्क्रीनशॉट नियंतु आंसर देबे कमेंट बॉक्स सेशन गोटे लाइक कर दे पिला माने एवरीबॉडी पकोतली वोटर पुलिस रो बही पिला माने आरे अमन पे बही आपने नहीं पारे Y594S कोड अप्लाई करी घर पड़े बैच चली जॉइन द बैच मैथ बैच ता सहित ऑफलाइन टेस्ट ये सब बढ़िया कथा ऑफलाइन टेस्ट ओके मैंने एसएसबी टीजीटी बैच चली 15 फेब्रुआरी बीएड एंट्रांस बैच यहाँ मन रखते आप बीएड एंट्रांस बैच ये 23 स्टार्ट हो सांगसाथी जी अच्छे जनईदेवे पीजीटी एजुकेशन बैच कंप्लीटली पीजीटी एजुकेशन बैच 2 एप्रिल स्टार्ट हो पे जॉइन द बैच लास्टली आपण छोटिया कथा डोंट फाइंड फॉल्ट फाइंड ए रिमेडी तो दोष त्रुटि खोजनी ताको समाधान करने तरीका खोजतु है दोष त्रुटि 1000 जन खोजदेवे हाउ टू सॉल्व दिस ट्राई टू फाइंड द रिमेडी नॉट द फॉल्ट थैंक यू सो मच पे तुम मैंने होमवर्क आंसर कमेंट बॉक्स में देवे और सेशन के लगला जनइबे स्टार्ट कर सेशन 5 मिनट पर जॉइन होते 5 मिनट पर थैंक यू सो मच नमस्कार।